Hello friends, this is Komal and welcome to my YouTube channel Cosmetic Line. Friends, today we are going to see some important facts. Those are mentioned under Drug and Cosmetic Act 1940, and that is really important to understand what type of cosmetics are here. There are some facts which are misbranded cosmetics, spurious cosmetics and adulterated cosmetics. These all terms are explained under Drug and Cosmetic Act 1940. So, here we are discussing one by one all three of this. Friends, first we are going to discuss misbranded cosmetics. These terms are given under Section 70C of Drug and Cosmetic Act 1940. So, what is misbranded cosmetics? A cosmetic shall be deemed to be misbranded if it contains a color which is not prescribed. That means जो color उसका है वो उसको prescribe ही नहीं किया गया है. Second case, if it is not labeled in the prescribed manner. There are some frames in which you have to label your product, and if it is not prescribable, that means that type of cosmetic comes under misbranded cosmetics. The third case is if the label or container or anything accompanying the cosmetics bear any statement which is false or misleading in any particular. If ऐसा कोई statement उसके ऊपर लिखा है जो false है, जो leads to false है, so that type of all cosmetics are comes under misbranded cosmetics. And another fact which are going to discuss here, that is spurious cosmetics, which are given under Drug and Cosmetics Act 1940 under Section 17D. So friends, what is spurious cosmetics? A cosmetic shall be deemed to be spurious if it is manufactured under a name which belongs to another cosmetics. For example, मैंने कोई क्रीम प्रिपेयर किया है और मैं किसी और टाइप के प्रोडक्ट के नेम से उसको सेल आउट कर रही हूँ. Second case, if it is an imitation of or substitute for another cosmetic or resembles another cosmetics in manner likely to deceive or bears upon it or upon its label or container the name of another cosmetics unless it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other cosmetics. That means if I am preparing something which is looks like Nivea cream, but ये Nivea नहीं है, ये उसका complete substitute है, but जो label है, जो उसका outer covering है, वो same similar है, वो Nivea के covering के type उसके label जैसा. तो ये जो complete substitute है, इस type का product अगर find out होता है, तो that should be comes under spurious cosmetics. The third case, if the label or container bears the name of an individual or company purporting to be manufacturer of cosmetic, which individual or company is fictitious or does not exist. जो प्रोडक्ट पे नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर रहता है और मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस रहता है, मैंने ऐसा कोई एड्रेस मेंशन कर दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कम इसमें ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, तो मैं उसको दूसरे नाम से सेल आउट कर दूँ, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, तो दैट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स कम्स अंडर स्प्यूरियस कॉस्मेटिक्स. द फोर्थ वन एंड लास्ट केस अबाउट द स्प्यूरियस कॉस्मेटिक इज if it is purports to be the product of manufacturer of whom it is not truly a product. किसी और मैन्युफैक्चरर के नाम से मैं वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट वो प्रोडक्ट मेरा है बट मैं चाहती हूँ वो पॉपुलर हो जाए, तो इसलिए मैं वो जो ट्रू प्रोडक्ट जिसका नहीं है उसके नाम से सेल आउट कर रही हूँ. Such type of cosmetics again comes under spurious cosmetics. And now the last term which are discussed under Drug and Cosmetic Act 1940 under 17E section, that is adulterated cosmetics. Friends, this name gives itself idea to you because adulterate means there are something mixing which has lower quality. So see what is exactly adulterated cosmetics. Cosmetics shall be deemed to be adulterated
if it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance. अगर कॉस्मेटिक्स अनप्लीजेंट सा स्मेल आ रहा है या वो डिकम्पोज हो गया है तो दैट इज एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स. सेकेंड केस, if it has been prepared, packed or stored under insanitary condition where it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health. अगर कोई कॉस्मेटिक है वो अनसैनिटाइजर कंडीशन में रखा गया है और उसमें कुछ रिएक्शन होके दैट शुड बी हार्म टू योर हेल्थ, सच टाइप ऑफ कंडीशंस और सच टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स आर कम्स अंडर एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स. The third case, if its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substance which may render the content injurious to health. अगर जो कंटेनर है वो कंपोज्ड है, उसमें कोई ऐसा केमिकल है या कंपोनेंट है जो पॉइजनियस है, तो ऐसे टाइप का भी जो कॉस्मेटिक्स है वो एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स कहलाता है. The fourth case, if it bears or contains for purposes of coloring only a color other than one which is prescribed. कोई कलर उसमें फॉर कलरिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया गया है बट वो प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई और कलर को प्रिस्क्राइब किया गया है, तो वो एडल्ट्रेट कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है. द फिफ्थ केस, if it contains any harmful or toxic substance which may render it injurious to health. Or sixth one, if any substance has been mixed therewith so as to reduce its quality or strength. अगर कोई substance mix कर दिया है so that quality will be reduces, तो ये सारे टाइप के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स कहलाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया इट्स ऑल गिवन इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अंडर सेक्शन 17. These all are important because it is important to know that what type of cosmetics are misbranded, adulterated and spurious. Hope so you like it, and friends, please if you have any doubt then communicate with us freely throughout our comment section box, and don't forget to press the bell icon. And friends, please subscribe, share, like and comment to our YouTube channel, and stay tuned and stay healthy. Thank you for watching.